Good morning, dear students. Welcome back once again in your computer class. Today, we are going to start your board question paper, that is 2013 question paper. It is your 2013 board question paper. So let us start. Duration, you already know that paper will be of 2 hours and the maximum marks will be 100, right? Now see, read the instructions which are given here. This paper is divided into 2 sections. Attempt all the questions from section A and any 4 questions from section B. And section B will consist of your programs only, right? And 6 programs will be there, and out of 6 you have to attempt only 4. And each program will carry 15 marks. So 15 marks each question, 4 you have to attempt. That means your section B is of 60 marks, right? And this one in section A, you have to attempt 4 questions. That means all the 4 questions you have to attempt it. There is no choice, and 40 marks. 4 questions of 10 mark each, right? Now let us start with the first one, section A, 40 marks. Now see on the right side, in the first question we are having 5 parts total and each carries 2 marks. So the first question is, what do you mean by precedence of operators? Now what is precedence? Precedence means priority. Precedence means priority of the operators, means how they are evaluated, when they will appear in the expression. That is known as your precedence. For example, if I say कि multiply and divide are having higher precedence than plus and minus. So this is the precedence, means it will goes from top to bottom. So this multiply and divide will have the higher precedence and this one is having the lower precedence. Okay? So in this way, all the types of operators are having the different precedence, and one table is given in your book. You have to learn that table, right? Now the next question is, what is literal? Literals are what? Literals are also known as constants. Literals are known as constants whose value cannot change during the execution of programs. Whose value cannot change during the execution of the programs are known as literals. Example, like we are having 4 or 5 types of literals. We have studied integer literal, character literal, string literal, boolean literal, real literal, and null literal. These are the types of the literals. So question is related to only the literals. What is that? So you only have to give the definition along with one example you can give here, because the question is of 2 marks. It is not specified you have to give the example, but it will be good if you will write the example also. So literal के लिए example आप दे सकते हो. For integer type, like you can write int a is equal to 10. This is your integer literal. If I write char ch is equal to suppose z in single quotes, it is a type of character literal. If I write string s hello, so this is which type? String literal, enclosed in double quotes. So in this way you can have the different types of literals. Next question, state the Java concept that is implemented through a superclass and a subclass. So Java concept में, if you have learned the OOPS features, because we know Java is a OOP language, so there are some OOP feature also, right? We have studied the data abstraction, data encapsulation, polymorphism, then your inheritance, right? So we need to specify that which OOP feature it is, like superclass and a subclass. ये किस में होता है? कौन सा concept इसको support करता है? Inheritance. Answer is inheritance, right?
In inheritance is the process in which we pass the properties of one class to the another class. अब इसमें क्या होता है, दो classes होती हैं. Suppose this is class 1 and this is class 2 and you are transmitting the properties from class 1 to class 2. So what will happen in this case, your C1, क्योंकि C1 की properties जा रही है तो ये आपकी होगी कैसी class? This is your super class, and in which you are going to transfer the properties, that is known as your subclass. And the process of transmitting the properties from one to another is called inheritance. So the correct answer of this question is inheritance. Next question. The act of representing the essential features without including background details. So the answer is what? Data abstraction. Correct answer is data abstraction. Got it? In which the internal details are hidden from the user and only the essential details are displayed. For example, camera. So camera में क्या होता है? There are so many buttons which are available for the different functions, for the different functionalities. So you only know it what, जैसे कि उसमें क्या होता है, उसमें एक आप कर सकते हो जैसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो एक पॉज बटन होता है, एक प्ले बटन होता है, एक रिकॉर्ड का भी बटन होता है ना. इस तरीके से बटन होते हैं उसमें, स्टॉप करने का मतलब पॉज हो गया वो. तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल बटन्स होते हैं. तो यू नो कि व्हाट कि इफ़ यू विल प्रेस प्ले बटन देन व्हाट विल हैपन, इफ़ यू विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन व्हाट विल हैपन. बट यू एक्चुअली डू नॉट नो दैट, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट दैट हाउ द इंटरनल प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस. Only the essential features are displaying to you, internal details are hidden. So this is the example of your data abstraction. Next one, give a difference. Now see this one question related to your annual syllabus, so leave this. Next question, what are the types of casting shown by the following examples? Now read here. Double x is equal to 15.2 and int y is equal to int x. So how many types of conversions we are having? Conversions जो होते हैं, data type conversions जो होते हैं वो कितने types के होते हैं? 2 types के होते हैं. Which one? Implicit and explicit. Implicit and explicit. Now implicit क्या होता है? Which is automatically performed by the compiler. ऐसा कन्वर्जन जो कि कंपाइलर खुद से परफॉर्म करता है, दैट इज़ नोन एज योर इम्प्लिसिट कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट क्या होता है? दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द यूज़र. ठीक है. सो एक्सप्लिसिट में क्या होता है? जब यूज़र कन्वर्जन परफॉर्म करता है देन रिमेंबर वन थिंग, एक ही पहचान है उसकी, आप एक चीज़ से उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यूज़ ऑफ दीज ब्रैकेट्स. इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अगर डेटा टाइप लिखा हुआ है तो समझ जाना कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ explicit conversion. Got my point? So now look at here in the first example. Double x is equal to 15.2 and int y is equal to int of x. इसका मतलब क्या है? जो x वैल्यू है आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर y. ठीक है. सो x किस टाइप की वैल्यू है? डबल टाइप की वैल्यू है. तो पहले डबल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इंटीजर में. और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको असाइन कर रहे हो किसके अंदर? y के अंदर. तो आपने पहले 15.2 को कितना बनाया? 15. एंड आफ्टर दैट कन्वर्टिंग इनटू 15 यू आर गोइंग टू असाइन इट इनटू y. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. यानी कि यहाँ मैंने खुद से, ये देखो जो ब्रैकेट्स में इंट लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स ये इसका मतलब आप इसे पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस टाइप का कन्वर्जन है आपका? एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होता है? int x इज इक्वल टू 12 एंड लॉन्ग y इज इक्वल टू x. अब x की वैल्यू किस में स्टोर होने जा रही है? y में. एंड y इज ऑफ टाइप लॉन्ग, यानी कि इंटीजर जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लॉन्ग में हो रही है. हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स एंड लॉन्ग टेक 8 बाइट्स. सो इज़ दैट कन्वर्जन पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल. देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच डायरेक्ट असाइनमेंट टेक्स प्लेस इज नोन एज योर implicit. Got my point? So the second answer is implicit. Next, name any 2 wrapper classes. Now wrapper classes, remember wrapper classes जैसे हम लिखते हैं ना, we write like int
n is equal to integer dot parse int in dot read line. This is what statement you write it, right? To read integer type of value. So what is that integer here? What is this? ये क्या है integer? Integer is your wrapper class. In the same way, if you want to read float type of value, so what should you write? Float, suppose m is equal to float dot parse float, ऐसे लिखोगे ना इन डॉट रीड लाइन. तो अब इसमें फ्लोट क्या हो गया? फ्लोट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैपर क्लास. बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो फ्लोट में एफ है, देखो यहाँ पे फ्लोट का एफ कैपिटल है, इंटीजर का आई इसमें कैपिटल है, यहाँ पे फ्लोट का एफ भी कैपिटल है. इट मीन्स व्हाट? दीज आर द रैपर क्लासेस. Got it? So if the question is here, write any two wrapper class, so you can write integer, you can write float, you can write character. ठीक है? Same for long, same for double, same for boolean. So many wrapper classes. See, got my point? These are the wrapper class, and focus on one thing. In every wrapper class I made this first letter capital everywhere. If you will write like this boolean, now it is not wrapper class. ये wrapper class नहीं है. क्यों? Because here this b is small and this is your data type. Are you getting the difference between wrapper class and data type? wrapper class में क्या होता है, आपका जो क्लास है ना, क्लास का फर्स्ट नेम हम कैपिटल बनाते हैं. ऐसे याद रखना, क्लास में फर्स्ट नेम कैपिटल होता है. तो बूलियन जितने भी रैपर क्लासेस होंगी, चाहे बूलियन हो, लॉन्ग है, डबल है, इन सब का फर्स्ट नेम क्या होगा? फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा? कैपिटल होगा. ऐसे ही अगर आप लिखते हो कैर, CHAR, तो कैर इज़ व्हाट? इट इज़ अ डेटा टाइप एंड इट्स इक्विवेलेंट रैपर क्लास इज कैरेक्टर. Got my point? So any two you can write it from here. Next one, what is the difference between a break and a continuous statement when they occur in a loop? Difference between a break and continuous statement. So do you know the difference between this? Break statement is used to terminate the loop, is used to terminate a loop in which it exists. It is used to terminate a loop in which it exists if the given condition is satisfied. लूप से बाहर आने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस लुक वन एग्जाम्पल. जैसे मैंने लिखा फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस. एंड इफ आई राइट इफ वैल्यू ऑफ i reaches to 3, यानी कि वैल्यू ऑफ i is 3, then break. ठीक है? और यहाँ पे लिखा है SOPLNI. Now in this case what will be the output? Try to do this yourself. Pause the video, do it yourself. After that I will tell you what will be the output of it. So look at here. If value of I reaches to 3, so our break statement will get encounter and break will take us out of the loop. That means here loop के बाहर. ठीक है? Otherwise if this condition doesn't satisfy, if condition is false, if condition true होगी तो ये बाहर लेके आएगा, condition false होगी तो ये क्या करेगा? ये break statement को skip करके next statement पे आ जाएगा. Right? So value of initial value of I is what? 1. 1 is less than equal to 5. Yes. Now control will come inside. नीचे आएगा. Value of I reaches to 3. क्या value of I 3 के equivalent है? No. Condition false. Break कर दो. Sorry. SOPLN कर दो. तो क्या print कर देगा पहले? 1. Then next time I plus plus कितना हुआ? 2. Now 2 is less than equal to 5. Yes. क्या 2 3 के equivalent है? नो. कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स में कहाँ जाओगे? SOPLN पर. प्रिंट कर दो 2 की वैल्यू, प्रिंट हो गई. वापस I प्लस प्लस कितना हो गया न्यू वैल्यू? 3. 3 इज लेस देन इक्वल टू 5. यस. देन इफ़ 3 इज इक्वल 3, क्या 3 3 के इक्वल है? ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? यस. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या चलेगा? ब्रेक.
और ब्रेक हमें कहाँ लेके आता है, लूप से बाहर, यानी कि ये वाला जो SOP LN I है अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो व्हाट विल बी योर आउटपुट इन दिस केस, 1 2. गॉट द डिफरेंस? Then in the same way, if in place of this break, if I write here continue, wait, let me write it again. For I is equal to 1 less than equal to 5, I plus plus, if I is equal 3, continue SOP LN I. Got it? Now see, यहाँ पर अगर if कंडीशन ट्रू होती है तो वो आएगा कहाँ, कंटिन्यू पर. और कंटिन्यू मुझे कहाँ लेके जाएगा, कंटिन्यू मूव करता है नेक्स्ट आइटरेशन पर, मतलब कि यहाँ पर. इफ़ मुझे जैसे इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं यहाँ आ जाऊँगी कंटिन्यू पर, और कंटिन्यू मुझे कहाँ लेके जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन पर. लेकिन ब्रेक कहाँ पे लेके जाता है, आउटसाइड ऑफ द लूप. गॉट इट? तो कंटिन्यू मुझे वापस ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और अगर इफ़ कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो हम कहाँ आ जाएंगे, SOP LN स्टेटमेंट पर. क्लियर है? नाउ लेट अस स्टार्ट द फंक्शनिंग. इफ वैल्यू ऑफ I इज इनिशियली 1 इज लेस देन 5, येस ऑफ कोर्स. 1 क्या 3 के इक्वल है, ये कंडीशन चेक होगी. 1 क्या 3 के इक्वल है, नो. कंडीशन फॉल्स में कहाँ आएगा, SOP LN पर. तो क्या प्रिंट कर देगा, 1. अगेन मूव बैक करो, I प्लस प्लस कितना हो गया, 2. 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 2 छोटा है 5 से, येस. फिर से कंडीशन चेक करो, क्या 2 और 3 इक्विवेलेंट है, नो. कहाँ हो गए, SOP LN I. प्रिंट करा देते हैं 2 को. नेक्स्ट टाइम I प्लस प्लस विल बी 3. 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस. 3 क्या 3 के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो व्हाट विल हैपन नाउ, कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो कंटिन्यू जैसे ही आया तो ये कंटिन्यू हमें कहाँ लेके चला गया, कंट्रोल को वापस ऊपर, यानी कि नेक्स्ट आइटरेशन पर. सो इन दैट केस कंटिन्यू के नीचे के जितने भी स्टेटमेंट होंगे, ऑल दोज स्टेटमेंट विल गेट स्किप्ड. सो द न्यू वैल्यू विल बी व्हाट, 4. कंटिन्यू देखो हमें वापस जब ऊपर लेके चला गया तो नीचे के स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाए, राइट. तो I प्लस प्लस कितना हो गया, 4. नाउ 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, येस. 4 इज इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होने पर आएगा SOP LN पर क्या प्रिंट करेगा, 4. अगेन I प्लस प्लस इज 5, अगेन कंडीशन ट्रू. क्या 5 3 के इक्विवेलेंट है, नो. SOP LN I कर दो, 5 प्रिंट हो गया. फिर से I प्लस प्लस 6 हो जाएगा. अब यहाँ पे जब चेक होगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, अब हो गई है कंडीशन फॉल्स. तो जब से कंडीशन फॉल्स होगी आप आ जाओगे लूप से बाहर. सो व्हाट विल बी योर आउटपुट इन दिस केस, 1 2 4 5. दैट मीन्स जब कंडीशन 3 आई थी आपकी, जब 3 हुई थी I की वैल्यू, तो उसने कंटिन्यू कर दिया था. दैट्स वाई इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग. दैट इज़ द रीज़न इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट इट विल कम आउट एंड योर फाइनल आंसर विल बी 1 2 4 5. Got it? So here we have completed this part. Next upcoming parts we will discuss in the next video.